Hello students, I am your physics teacher. Now I am going to start the force and laws of motion, which is nothing but the your second chapter of physics. So in this, what is the meaning of force? Let's start. Suppose there is a body, a man tries to pull this body towards this side. That means a man is trying to pull the body at his side. Okay. Now, the next condition is, suppose this is another body and the man tries to apply a force by his hand to move it in the forward direction. In the both cases, this man A is trying to push the body or pull the body. Answer the question. I said that a man is trying to just ये body इसको खींचना है. So whether the condition of push is fulfilling or pull, and this man B is trying to push or pull. What you can say is that in this condition, a man is trying to pull the body. Here the condition of pull will be true, and what he is doing is he is pushing the body. So in short, I can say that this man is trying to push the body. Suppose I am the man and I am trying to push the body in this direction, and in this condition what I am trying to do is just to pull the body towards me. So what I can say is force is nothing but, I can say that either a case of push or pulling a body is known as applying a force. Can you imagine it? Push or pull. If these two conditions are satisfying on any body with respect to the man, with respect to the any object, that means he is applying the force. So is it true? Yes. Now we are going to talk about the nature of force. Now we are going to talk about the nature of force. Let's say what I am saying is nature of force. It could be of two conditions. First one is balanced in nature, and second one is unbalanced. It is mentioned in your NCERT textbook. Okay. What do you mean by the balanced force and what do you mean by the unbalanced force? Let's discuss. Suppose this is again the object whose mass is m and a force of 10 न्यूटन. आपने एक बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसको इधर खींचा. ये बॉडी मूव करेगी कि नहीं? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी. किस डायरेक्शन में? इन दिस डायरेक्शन. 10 न्यूटन का फोर्स लगा के आपने खींच लिया. सपोज सेकंड कंडीशन. नाउ सेम बॉडी इज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. This horizontal plane has the smooth surface. Let's suppose smooth surface. Now 10 न्यूटन का फोर्स आप इधर लगा रहे थे. Again you are acting a 10 न्यूटन फोर्स on this direction. तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? What I am asking is that please tell me that this body will go in this direction, in the forward direction और in the backward direction. कौन सी कंडीशन होगी? इस पर सर कोई भी फोर्स आपका एक्ट नहीं करेगा. आपने 10-10 न्यूटन के फोर्स लगा दिए. 10 न्यूटन का इधर से खींच रहा और 10 न्यूटन का इधर से खींच रहा, तो ये बॉडी कुछ ऐसी हो जाएगी. कंडीशन आपने फोर्स लगाया
और ये 10 न्यूटन इधर भी खींच रहा, 10 न्यूटन इधर भी खींच रहा, तो ये बॉडी मूव करेगी ही नहीं, ये एक्चुअली स्टेशनरी पोजीशन में आ जाएगी। किस कंडीशन में? रेस्ट की कंडीशन में रहेगी जब आपका फोर्स भी लग रहा है। इसमें ये बॉडी आपकी खींच के इस डायरेक्शन में चली जाएगी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। और यहीं से आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन शुरू हो जाता है। इस बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड कंडीशन की वजह से ही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन शुरू होता है। आप ये कहते हैं कि सर जब तक फोर्स बैलेंस्ड है, दैट मींस दिस कंडीशन, we are trying to pulling a body with a certain amount of force and we are trying to push the body in this that same amount of force। ये दोनों फोर्स अगर सेम है तब तो बॉडी आपकी रेस्ट की कंडीशन में रहेगी, कुछ नहीं होगा इसके साथ। लेकिन जैसे ही फोर्स अनबैलेंस्ड हो जाएगा, दिस कंडीशन दैट यू आर अप्लाइंग a 10 न्यूटन फोर्स ऑन दिस बॉडी in only a unit direction, that means this body came to at this position, और इसकी वजह से जो आपने फोर्स लगाया आपके डिस्प्लेसमेंट हुआ। दिस डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स together makes a relation which is known as the Newton's first law of motion, which we will read in the next video. Okay, thank you and Jai Hind.